Hello everyone, welcome back in our online session for Standard 8, our subject Maths, and our current topic Variation, lesson number 7, and subtopic Practice Set 7.2. In variation, in last session you had seen about the inverse variation. There are two types of variation, direct variation and inverse variation. So, we are going to solve practice set 7.2, which is based on inverse variation. I am Naina Giti ma'am, your maths teacher. Then let's start our session. Practice set 7.2. Practice set 7.2. Our question 5. Question second from practice set 7.2. Find constant of variation and equation of variation. In last session we solved first example from question number 2. Today we are going to solve second, third example from question number 2 from practice set 7.2. Our question is find constant of variation and equation of variation. If there are two quantities are given and they inversely proportional to each other, means there are inverse variation between both quantity, then we have to find out constant term, means k, which is k, the value of k, and variation of constant of variation means value of k, and equation of variation. After finding the value of k, means constant, you have to write down the equation. So first example, Z inversely proportional to W. When Z is equal to 2.5, then W is equal to 24. Means the quantity Z जब 2.5 होती है तब W की quantity होती है 24. There are inverse proportion between Z and W. So we write Z as 1 upon W. So directly inversely proportional to W, therefore Z is equal to K upon W. If we remove this sign, direct proportional, then we take a constant term as a K. So K into 1 means K upon W. In inverse variation you get Z is equal to K upon W. जो भी क्वांटिटी होगी इसमें ये इक्वेशन तैयार होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K इंटू सेकेंड टर्म होती है, यहाँ पे K अपॉन सेकेंड टर्म होती है. ओके, अगर हमने W को इस साइड में लिया LHS में, देन यू गेट Z इंटू here K is a constant. K is a constant. We take W in LHS, you get Z into W is equal to K. Z into W is equal to K. So you can write equation in inverse variation, Z into W is equal to K. Z into W is equal to K. Now substitute the value of Z and W, you get value of K. Z की 2.5 and W की 24. If you put up in this Z and W equation, you get the value of K means constant. So write down again Z is equal to 2.5 and W is equal to 24. Therefore 2.5 into 24 is equal to K. So multiply 2.5 into 24. 25 और 25 का मल्टीप्लिकेशन करना है हमें. So 24 into 2.5 you get 60. Okay, 25 4s are 100, 25 2s are 50, plus 10 60 is 600. Taking decimal point you get 60.0. So the value of constant K you get 60. This is the constant of variation. Variation का constant हमें मिल गया है 60 for this example. Okay, जब Z की 2.5 होती है और W की 24 वैल्यू होती है तब हमें constant term 60 फाइंड आउट की हमने. So you can write equation ZW is equal to 60. Put the value of K in ZW is equal to K, which is equation ZW is equal to 60, means Z into W is equal to 60.
Now see second example. There is a inversely proportional between s and t square. A is directly proportional 1 upon t square means A is inversely proportional to t square. मतलब s और t square में इन्वर्स प्रोपोर्शन है. जब s चेंज होता है तब t स्क्वेयर के वैल्यू में चेंज होता है. ओके मतलब अपोजिट चेंज होता है. सपोज एस डिक्रीजेज देन टी स्क्वेयर इंक्रीजेज. एस इंक्रीजेज देन टी स्क्वेयर डिक्रीजेज. वैल्यू ऑफ टी डिक्रीजेज. इफ एस इज इक्वल टू 4 देन टी इज इक्वल टू 5. जब हम एस की वैल्यू 4 लेते हैं तब टी की वैल्यू 5 आती है. ओके सॉल्यूशन. एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर. देयरफॉर हम प्रोपोर्शन साइन को निकाल लेते हैं. एस इज इक्वल टू के अपॉन टी स्क्वेयर. यू गेट एस इज इक्वल टू के अपॉन टी स्क्वेयर. वापस हम टी स्क्वेयर को एस के पास लाएंगे. यू गेट एस टी स्क्वेयर. एस टी स्क्वेयर इज इक्वल टू के. दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. एस टी स्क्वेयर इज इक्वल टू के. दिस इज द इक्वेशन ऑफ इनवर्स वेरिएशन. ये इनवर्स वेरिएशन का इक्वेशन तैयार हुआ है फॉर दिस सेकंड एग्जांपल. इफ एस इज इक्वल टू 4 देन टी इज इक्वल टू 5. अभी हम एस और टी की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमें के कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी. एस इज इक्वल टू 4 इंटू 5 स्क्वेयर. सो इन नेक्स्ट स्टेप एस इज इक्वल टू 4 एंड टी इज इक्वल टू 5. देन पुट द वैल्यू 4 इंटू 5 स्क्वेयर. टी का स्क्वेयर था इसलिए हमने 5 का स्क्वेयर लिया. 4 इंटू 5 स्क्वेयर इज इक्वल टू के. 5 का स्क्वेयर क्या होगा? 4 इंटू 25 इज इक्वल टू के. 4 into 25 is equal to k. Therefore, you get k is equal to 4 into 25 means k is equal to 25 for the 100. K is equal to 100, which is constant of variation. So in this example, you get constant as 100. Value of constant k is equal to 100. Now equation of variation, inverse variation. So equation is st square is equal to 100. You can write st square is equal to 100 for this example. So in this way you have to find out first constant, write the equation, then find out the constant. The values are both quantities are given, then you can find out the from equation first value of constant k and then put the value of constant k and write down the equation. Thank you.